Welcome to Raw Perfect classes. In this video, I will discuss about advanced statistics for economics. And this subject is for plus one class arts or commerce. Now I am going to start. I will discuss in this video, I will try to discuss all these contents. First, introduction, introduction to economics and statistics. Second, collection of data. Third, organization of data. Fourth, presentation of data. Fifth, measures of central tendency. Sixth, correlation. Seventh, index numbers. And eighth, use of statistical tools. Now I am going to start introduction to economics statistics. What is economics? Economics refers to a subject which studies economic aspects of human activities, which studies aspects of human activities. The word economics, the word economics is composed of two words, two Greek words. First, okos. Second, nemin. Okos means household and nemin means to manage. Means economics is created from two words, okos and nemin. Okos means household, nemin means to manage. It means economics is a household management. Economics is a household management. Household management. Economics is as old as the existence of mankind. Economics is as old as existence of mankind. Economics is as old as existence of mankind. Mankind means human beings. And economics was known to be political economy in the starting. According to this view, we can say economics was considered to be a branch of state administration. In its present form, in which we study economics, it was first of all defined by Adam Smith. Who defined it first? Adam Smith. That is why Adam Smith is known to be the father of modern economics. Who is the father of modern economics? Adam Smith. After that, we can say many economists gave their own definitions about economics, and economies developed as a subject over time. These economists mainly include Alfred Marshall, Robbins, and Professor P.A. Samuelson.
क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन एक्टिविटीज के इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है। और इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से बना हुआ है? टू ग्रीक वर्ड से बना है, ओकोस एंड नीमिन। ओकोस का मतलब है हाउस होल्ड एंड नीमिन का मतलब है टू मैनेज। और इसका मतलब ये है इकोनॉमिक्स एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। इकोनॉमिक्स जितनी पुरानी है, कितनी पुरानी है? जितनी की मैन काइंड यानी कि ह्यूमन बींग जितना पुराना है। इकोनॉमिक्स को हम पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहते हैं, स्टार्टिंग में हम पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बोलते थे इसको। और इस व्यू के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स जो है एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रांच भी कंसीडर की जाती है प्रेजेंट टाइम में। जिसमें हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, वो किसने डिफाइन किया है? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। और कई इकोनॉमिक्स के बाद भी आए जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स के बारे में। जिन्होंने इकोनॉमीज जो डिवेल्प हुई, जब इकोनॉमीज जैसे से डिवेल्प की हुई ओवर एन टाइम, तो उन्होंने उनको इकोनॉमिक्स में और भी डेफिनेशन दी है। अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्सन और प्रोफेसर पी ए सैमुअलसन, इन्होंने भी बहुत सारी इकोनॉमिक्स की बुक्स भी लिखी हैं जो जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस दी हैं। अब कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस की डिस्कशन कर रही हूँ। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट डेफिनेशन is related to wealth. Wealth means money. Wealth definition, which is given by Adam Smith. Adam Smith. अब एडम स्मिथ क्या कहते थे कि इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स is an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. According to Adam Smith, क्या डेफिनेशन उन्होंने दी है कि इकोनॉमिक्स के एक इंक्वायरी है, नेचर इज एन इंक्वायरी इनटू नेचर, और कॉजेज मीन्स रीजंस है, ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। नेशंस की जो वेल्थ है उसका एक कॉज है इकोनॉमिक्स। According to this definition, we can say that economics is the study of those activities which are related to wealth. Or as per the view of Adam Smith, wealth refers to physical goods. Here wealth refers to physical goods. Or this definition is given in by the Adam Smith in the book An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nations book, which was published by the Adam Smith in 1723 to 1719. And that's why Adam Smith is known as father of economics. But some other economists criticize this definition, like Carly Ruskin, Charles Dickens. These economists criticize this definition. They said economics as a dismal science. Economics is a dismal science just because of the interpretation which is given to economics by this definition. They said it is wrong to give more importance to wealth than human beings. And in this definition, they also said that because wealth is only a means of promoting human welfare and it's not end in itself. In fact, wealth is for human beings.
इट्स नॉट ह्यूमन बींग्स आर फॉर वेल्थ। मीन्स कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को इम्पोर्टेंस जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, वो कहते हैं कि वेल्थ सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए है, ना कि ह्यूमन बींग्स वेल्थ के लिए है। सो दे क्रिटिसाइज द एडम स्मिथ्स डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन is related to material welfare. Material welfare definition. मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन में क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू वाइडन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, if you want to widen the scope of economics and save it from criticism, Alfred Marshall, who gave this definition, Alfred Marshall, when this definition is given 1842 to 1924, he gave this definition in his book name is Principles of Economics. Principles of Economics. When this published 1890. In this book, Alfred Marshall given economics that economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. In this definition, Alfred Marshall says that economics is the study of ordinary business of life. Economics is the study of ordinary business of life, or those economic activities of human beings which are related with the acquisition and use of wealth for the promoting human welfare, but it neglects non-material goods or services. इन दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स क्या जो अल्फ्रेड मार्शल है उसने क्या कहा है, वो कहता है कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ह्यूमन बींग्स की जो कि सिर्फ उन चीज़ों को किनको ह्यूमन वेलफेयर की प्रमोशन के लिए वेल्थ का यूज़ और उसको एक्वायर्ड करने से के साथ ये रिलेटेड है। ये नॉन मटेरियल जो गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती है, ये इसको निग्लेक्ट करता है। लेकिन अब इस डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया। किसने इसको क्रिटिसाइज किया? प्रोफेसर रॉबिन्स ने। प्रोफेसर रॉबिन्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि
वेरियस रीजंस है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वो कहता है कि रोबिन्स, मतलब जो रोबिन्स है उन्होंने कहा है कि रोबिन्स इज ऑफ द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज नॉट ए सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस नहीं है, rather it is a human science which is the study of all human beings whether they are the part of society or not। इकोनॉमिक्स जो है इज नॉट ए सोशल साइंस, ये सिर्फ एक मतलब ये एक सोशल साइंस नहीं है, रेदर इट इज ए ह्यूमन साइंस विच इज स्टडी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ये पूरे ह्यूमन बींग्स की स्टडी कर रहा है, चाहे वो सोसाइटी का पार्ट है चाहे वो नहीं है। सेकेंड पॉइंट में रॉबिन कहता है कि ह्यूमन वेलफेयर डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन फिजिकल गुड्स। जो ह्यूमन वेलफेयर है, अगर हमने ह्यूमन का वेलफेयर करना है तो वो सिर्फ फिजिकल गुड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सर्विस, जो आप सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हो सोसाइटी को, जैसे डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, मतलब लॉयर्स है, तो ये एक सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। थर्ड वो कहता है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स दे आर मैनी सच फिजिकल गुड्स, जैसे अल्कोहल है, ओपियम है, सिगरेट्स वगैरह है, इन फिजिकल गुड्स का सोसाइटी जो ह्यूमन वेलफेयर है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। दीज गुड्स आर नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बींग्स, so that's why we cannot say that human welfare is fully depend on the physical goods। Marshall has given no explanation about the ordinary business of life, क्योंकि मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, इसीलिए रॉबिन्स ने उसको भी क्रिटिसाइज किया है। और इधर से मार्शल की डेफिनेशंस को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि सिर्फ मटेरियल थिंग्स के ऊपर ही हम डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है नेक्स्ट डेफिनेशन, स्केर्सिटी डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिलेटेड टू स्केर्सिटी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन में क्या कहा गया बाय रॉबिन्स, ये डेफिनेशन किसने दी है, रॉबिन्स ने दी है। व्हेन ही गिव दिस डेफिनेशन, he gave this definition in his book an essay an essay on the nature, on the nature and and significance of significance of economic science, economic science। कब दिए उसने, in 1932। who give this definition, रॉबिन्स, प्रोफेसर रॉबिन्स ने इसको इस डेफिनेशन को इस बुक को लिखा है। उन्होंने क्या कहा अपनी डेफिनेशन में, उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior behavior, as a,
relationship, as a relationship between ends and scarce. Means scarce means which have alternative uses. According to Robbins, economics क्या है? It is the study of those human activities which are related with the satisfaction of unlimited wants using limited means. Means sources by which we satisfy our wants. Means are not only limited but they have alternative uses. Various alternative uses of limited resources for the satisfaction of unlimited wants give birth to the problem of choice. So here Robbins क्या कहता है? Robbins कहता है कि it is a study of those human activities. ये उन human activities की study है जो आपके अनवांटेड मतलब जो अनलिमिटेड जो वांट्स है उनकी सेटिस्फेक्शन के साथ रिलेटेड है. आपने लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, आपने उसके साथ अपनी अनलिमिटेड जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करना है. मीन्स रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड. रिसोर्सेज वो कहता है रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, उनके ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट you are taking a daily tea, but when price go up of tea, then you think about what will be the alternative of tea which we will take instead of the tea. So you can say that there is the alternative of tea is coffee. When the coffee's prices go up, then you can you can shift to the tea. So here this definition also say that means are not only limited but they have the alternative uses. Various alternative uses of limited resources for the satisfaction of unlimited wants which give the birth to the problem of choice. क्योंकि ये प्रॉब्लम चॉइस को भी प्रॉब्लम रेज कर देता है. क्रिटिसिज्म. अब इस डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया. किसने इसको क्रिटिसाइज किया? डर्विन, फ्रेजर एंड एली, इन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया. फॉर दे सेड फॉर नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड. According to this definition, economics is the study of those activities of mankind who are related with the satisfaction of unlimited wants using limited means. And this definition has made economics as a science of choice or price determination. This definition also provides no solution to the economic problems and does not outline the strategy to promote human welfare. These words are said by the other economists who criticize this definition. Now, fourth definition, that is growth. Growth oriented definition. This definition is given by Professor P.A. Samuelson. क्या कहते हैं सैमुअल्सन? उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? डेफिनेशन ये है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ man and society choose with
or without, with or without use of money, and no money, no money, sorry, no employee, no employee, scarce productive resources which could have alternative uses, alternative uses to produce, to produce various commodities over time, over time, and distribute, distribute them for consumption. Now or in future. Now or in future. Among various people, various people and groups in society, in society. This definition is given by प्रोफेसर सैमुअल्सन. अब इस डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं वो, कहते हैं प्रोफेसर पी ए सैमुअल्सन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money, no employ scarce productive resources which could have alternative uses, and to produce various commodities over and time and distribute them for consumption now or in future among various peoples and groups in society. मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, इज द स्टडी भी कैसे मैन और सोसाइटी चूज करते हैं विद और विदाउट यूज ऑफ मनी, उनके पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, और कैसे वो अपने ऑल्टरनेटिव जो यूजेस है उनको यूज करते हैं, कैसे वो अपने वेरियस कमोडिटीज, कमोडिटीज क्या होती है गुड्स, उनको प्रोड्यूस करते हैं ओवर एंड टाइम, कैसे वो कंजम्पशन के लिए उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आज करंट में और फ्यूचर में, वेरियस पीपल्स हैं जिनके बीच में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंजम्पशन के लिए, सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं उनमें. तो ये एक तरह से प्रोफेसर सैमुअल्सन ने डेफिनेशन दी है. अब इस डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया. कहता है जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है ये हमें क्या देती है, इंपॉर्टेंस देती है इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड. ये मेन फोकस डालती है कि हाउ टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, and this also made the scope of economics very wide, and this definition also includes almost all aspects which are related to economics in it. So in conclusion we can say that it becomes clear that no definition of economics is complete in itself, and which is accepted by the accepted definition of economics which can be derived from study of these definitions. So we can say that economics is not only you can say not only related to wealth, not only related to material welfare, scarcity and growth oriented. It is combination of all these. So you can say ह्यूमन इकोनॉमिक्स इज, इकोनॉमिक्स में क्या आपके पास हम ये कह सकते हैं जो मेन एलिमेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, मेन एलिमेंट्स क्या है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के,
फर्स्ट हमारे पास आएगा ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर आएगा इसके अंदर। इसके आगे क्या है, इनकी ह्यूमन की कुछ अनलिमिटेड वांट्स होंगी, अनलिमिटेड वांट्स भी होएगी और कुछ लिमिटेड वांट्स होएगी। तो ह्यूमन बिहेवियर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड वांट्स को। और जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनकी भी उनकी अर्जेंसी में भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन अर्जेंसी। और दूसरी साइड जो लिमिटेड वांट्स हैं उनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे, ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे। और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, एमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, और इसके साथ अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक वेलफेयर होगी। सो इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज टू हाउ टू यूटिलाइज देयर लिमिटेड resources which have alternative uses in production, consumption, exchange, so that optimum rate of economic growth and economic welfare of mankind is achieved. Now next topic is related to economics. Economics is a science or study of choice, study of choice. क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और स्टडी ऑफ चॉइस। दिस इज बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। क्यों हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस और स्टडी ऑफ चॉइस है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड, and these resources have alternative uses, or in such situation we can say human beings have to make choice about the use of resources and satisfaction of specific wants. Human beings have to make choice about how to satisfy their maximum wants with their limited available resources. That's why we can say that economics is a science of study of choice. In fact, problem of choice is the main economic problem. Now next question arises, what is the problem of choice? 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 The problem of choice is the process of making a selection about how to use available limited resources for the satisfaction of maximum wants, so as to you can get maximum satisfaction. The problem of choice arises when there are the following reasons. First reason is when human wants are unlimited, then it creates the problem of choice. Second, resources available for satisfying human wants are limited, then problem of choice also creates. Third, as their resources are limited in comparison to their needs, then resources have alternative uses, so that's why also creates the problem of choice. For example, suppose a student who has rupees 1000 available with him. He can spend this amount to satisfy any of his wants, and however three of his important wants are to enjoy a party with their friends, to buy a book, to buy a bag. Being a student in need of book
he decides to buy that book so that his studies are not affected. Thus, he has to make a choice because limited availability of resources with him. Similarly, a farmer who can sow many alternative crops in the field, he has to make a choice as to which particular crop he wishes to sow in a particular field. And this is the problem of choice. Why is economics a science or study of choice? The limitation, the limited, the scarcity of resources is the main reason, main cause of problem of choice. It means economics is the science or study of choice because of the limited of resources. And scarcity and choice are both are universal. And the problem of scarcity and choice are universal. These problems exist at every level of economic decision makings. And this becomes clear from these discussions. From, for example, first, for a consumer, the income of a consumer is limited as compared to their needs. Consumer has face problem about the scarcity and choice because he has to make a choice of allocating his limited income among different uses in such a way that he gets maximum satisfaction. This is the problem of scarcity and choice. Second, for a producer who wants to produce goods but he has a limited resources available, so he has to face the problem for the choice and for the scarcity, and he also has to allocate limited resources available with him in the production of different products in such a way he earns maximum profit. For a nation, resources which are available with the nation, they are also limited in relation to the in comparison to their needs of their nation. So a nation also faces the problem of limitation, or you can say scarcity and choice. A nation has to use its resources in such a way, in such a method, in such a way, so that they can social welfare is maximized. For the world, you can say for the world also scarcity choice are the resources which are available with the whole world are scarce in comparison to their needs of the world. So world as a whole also faces the problem of scarcity and choice. So at the end we can say scarcity and choice are the universal problems which are facing, which are two main factors which result in the emergence of economic activities. Now, what are the economic activities? Now, question arise, what are the economic activities? What are economic activities? What is economic activities? There are mainly two types of economic activity. There are economic activities: an activity which is concerned with any aspects of satisfaction of human wants with the utilization of limited resources, that is known as economic activities. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जो आपके ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फेक्शन के एस्पेक्ट्स के साथ कंसर्न है, और जो अपने मतलब ह्यूमन वांट्स जो है वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के साथ जब उसको सेटिस्फाई करता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. Economic activities, in fact, it is a study of economic activities, and you can say uh, the different aspects of various economic activities which are analyzed under the economics.
there are different economic activities like production, consumption, distributions, exchange. These are the economic activities. In production, we can say it is a economic activity which is used for utilizing various inputs to produce a product. In production, economic activity is utilizing various inputs for producing a product. Through the production, utility is created for the satisfaction of human wants. Human wants. फर्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? प्रोडक्शन. सेकंड है कंजम्पशन एंड थर्ड वन है डिस्ट्रीब्यूशन. फोर्थ है एक्सचेंज. ठीक है. प्रोडक्शन में क्या बताना है हमने कि प्रोडक्शन क्या है? इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ यूटिलाइजिंग various inputs to produce a product, and through the production utility is created for the satisfaction of human wants. For example, a producer wants to produce the cloth by utilizing cotton and other relevant inputs. These are the economic activities. In consumption, consumption is the economic activity of utilizing various goods and services which are provided by the human beings for the satisfaction of their wants. Under consumption, you can say utility is utilized for the satisfaction of human wants. For example, if you want to wear a shirt, if you want to eat, if you hunger, then you want to eat food, and if you need if you want to buy the cell phone, then you purchasing cell phone. ठीक है. This is the consumption. When you purchase that cell phone, that is the consumption. Next, distribution. Distribution is that economic activity which is concerned with the division of the national income among various factors of production, and various factors of production get their share in the national income on the basis of their contribution in the creation of national income. For example, जैसे land it gets the rent, labor gets wages, capital gets interest, entrepreneur gets profit, and exchange is that economic activity which is related with the sale and purchase of goods and services, and it also includes services of the factor of production. In modern times, you can say exchange takes place with the help of money. You give the money and you can take in back goods. One who sells goods and services gets the money. On the other hand, one who buys the goods and services, they are, also has to pay the money. And what factors of production and factor price? Land, labor, capital, entrepreneur. These are the four main factors of production. Land, labor, capital, entrepreneur. Entrepreneur is the owner of the business. And these are the four main factors of production. These are the main four primary factors of production. And factor prices for these respectively are: for the land, rent; for the labor, wages; for the capital, interest; entrepreneur, profit. These are their price, factor price. And economic activities, you can say, one must not believe that economic activity always generate income. Economic activity may or may not generate income. It may or may not generate income. And or you can say, for example, consumption is also an activity, economic activity, but it does not generate income. That is why it is said that all income generating activities are economic activity, but all economic activities are not necessarily income generating activities. Now next topic is principal branches of economics. What are the principal branches of economics, and what are the micro and macro levels of economic activities?
Now, next topic I will discuss about principles of principal branches of economics. Principal branches of economics. There are two types of principal branches. First is micro, second is macro. Now, first I can say here that economic activities of human beings. Economic activities of human beings which can be divided into two main parts, that is individual economic activities and collective economic activities. मीन्स जो आपके पास ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज है, आपके पास जो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज है, ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज है, इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव. इंडिविजुअल और कलेक्टिव इकोनॉमिक्स, कलेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. ठीक है. अब कलेक्टिव और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जब डिवाइड किया गया है तो आगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ये कह सकते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल लेवल पर होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी होती है वो कलेक्टिव लेवल पर होती है, होल स्टडी करता है, वो पूरे वर्ल्ड की एक तरह से पूरे नेशन की स्टडी करेगा. सो नाउ आई एम डिस्कस अबाउट व्हाट इज ए माइक्रो इकोनॉमिक्स. That branch of economics which is related with the study of economic activities of individual units, that is known as microeconomics. For example, when we study the study of economic activities which are related to one individual person, one individual firm, one market, one industry, then we can say that this study comes under the microeconomics. According to Boulding, K.E. Boulding, he is the economist. According to this economist, microeconomics is the study of particular firm. एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. पर्टिकुलर हाउस होल्ड की स्टडी, पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्राइजेज, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कॉमोडिटीज, यानी कि सिंगल चीज की जब स्टडी की जाती है, चाहे वो फर्म की हो, चाहे वो हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल प्राइसेस है, वेजेस है, इनकम्स है, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज है, पर्टिकुलर कॉमोडिटीज है, उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ सेकंड, macroeconomics. That branch of economics which is related with the study of economic activities or at an aggregative level, at an collective level, at a collective level पर जब आप study करते हो, that is known as a macroeconomics. For example, if you want to study of aggregate demand, aggregate supply, and if you want to generate price level of national income, that comes under the scope of macroeconomics. According to the K.E. Boulding, macroeconomics is that part of economics which studies overall aggregates, averages of system, and it tries to define these aggregates in a useful way and to examine their relationship. This is a macroeconomics. Now next, nature of economics. Now I am going to discuss about nature of economics. What type of nature of economics? Nature of any subject which refers to whether it is a science, it is a art, it is both, that is the nature of economics. So now when we analyze the nature of economics in this it say that we can say it is both a science as well as art. Economics is a social science. According to Seligman, he said that a science is either a natural science or social science. Science क्या है? एक नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है.
अगर इसमें हम अगर इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक्स इज नॉट ए नेचुरल साइंस लाइक ए फिजिक्स और केमिस्ट्री. So that this is so because it is not an exact or pure science like a natural science is. In fact, economics क्या है, एक social science है. This is so because economic क्या करती है, study करती है, analyze करती है and find करती है solution related to economic problem of an individual who is a part of society. And economics is an art as well. Economics is definitely a social science. So we can say economics is both a positive as well as normative science. Economics को हम positive और normative science भी बोलेंगे. As a no positive economics ये किसके रिगार्डिंग स्टडी करता है, ये फैक्चुअल पोजीशन के रिगार्डिंग स्टडी करता है विच आर कंसर्निंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इट मीन्स इकोनॉमिक्स जो है एज ए पॉजिटिव ब्रांच ऑफ स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी. क्या था, क्या है और क्या होगा इन फ्यूचर. एज ए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यू कैन से इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है, रिकमेंड करता है आइडल पोजीशन को जो कि कंसर्न है विद द इकोनॉमिक इश्यूज के साथ. और यू कैन से it means a normative science, normative, it is a normative branch of study which is the study of what ought to be, क्या होना चाहिए. And different economics to academicians or experts, they also recommend that different course of action which are regarding to what ought to be. So you can say normative economics involves value judgments. क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर, वैल्यू जजमेंट्स. वाई, वाई इकोनॉमिक्स, क्यों इकोनॉमिक्स है. इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ जो पीपल है दे आर इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है हमारी, कंजम्पशन. ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स है दे एज कंज्यूमर्स, दे आर एज ए कंज्यूमर्स and they consume the variety of goods and services. But for this, goods and services have to be produced. So you can say these goods are produced by producer units, that is known as firms. Seller who facilitate the process of exchange of goods and services between producer and consumers. So, in order to get goods and services for consumption, consumers have to purchase these goods. Consumers need resources or income for buying goods, for satisfying their wants, for consumption of goods and services. In order to get income, they have to work in gainful employment. So, because nothing can be had without a price. In addition to this, we can say resources are always limited in relation to their needs. Means जो sources है वो हमेशा क्या रहेंगे, limited रहेंगे. आपकी जो needs है वो unlimited है. Resources have alternative uses as well. The scarcity of resources which results in economic problem or problem of choice. So in order to understand how to analyze, how to find solution to economic problem, there is a need to study economics, principles, laws, theories of economics which facilitates you have correct understanding of economic problems and how to help to chalk out of a solution of economic problems. So statistics proves a vital help to economics. Now what is the relationship between statistics and economics? Statistics which present numerical information about the economic problems in the form of economic facts or economic data. So you can say it helps in better understanding how to analyze, how to explain
economic problem. Not only this, it becomes easy to find a solution to economic problems with the help of statistics. It also proves that statistics is highly useful in the study of economics. You can say, you can take an example, suppose if you want to study about the student of economics who wants to analyze the problem of unemployment in India. For this, student will have to collect data about the unemployment in India. Then he will have to analyze that data. After that, that data will be analyzed with the help of statistical methods, statistical tools, and in addition to this, the methods to solve problem of unemployment can also be outlined with the help of statistics. So you can say statistics proves of vital help in the study of economics and economic problems. कहने का मतलब एक स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को एनालाइज करना चाहता है इंडिया में, तो इसके लिए वो पहले क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो भी पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करेगा। फिर उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स, और जो डिफरेंट डिफरेंट वो इसके लिए क्या करेगा, मेथड्स इंप्लीमेंट करेगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को आउटलाइन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो हम यही कहते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो प्रूव करता है कि वो इकोनॉमिक्स की स्टडी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी में भी हेल्प करता है। So it means there is a close relationship between the statistics and economics, and study of economics, analysis of the economics problem and determination of policies how to solve the economic problem, which cannot be possible without the statistics. That's why we can say it's very important for any student of economics to have the good knowledge of statistics. Good knowledge of statistics. मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में आपको नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, आपने उसको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि आपको नेक्स्ट कमिंग अब वीडियोस जो है एक स्टैटिस्टिक्स फॉर एडवांस स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो है आपको मिल सके। थैंक यू।